Hello, everyone. How are you all? I hope that you all are doing great and having fun in learning English. Welcome to your this class of NS training regarding spoken English. So my voice is clear to all of you. My voice is clear. You can use your chat box. Okay. Okay, so I hope that this class will be an amazing one. So let's get started. First of all, let me give the brief introduction of NS Training Private Limited to all of you. You know that it's been since 2020, NS Training is actually certified institute from FPR and SECP. So there is not at all any doubt regarding joining different kind of courses. You know, NS Training offers different kind of courses regarding communication skills, regarding latest, you can say latest topics and latest skills that everyone need to know about. Okay, so I hope कि आप सब इस क्लास में मौजूद हैं तो आप सबके माइंड में ये होगा कि आपने किस तरह से आप लोगों ने जो है वो इंग्लिश को सीखना है. Yes, okay, just give me 1 minute. So okay, I hope कि आप सबका माइंडसेट लर्निंग माइंडसेट होगा और आप लोग इस क्लास से डिफरेंट चीजें सीखेंगे, right? So how many of you are willing, to learn English in this session and want to know that how can you improve your accent? You can write it in the chat box. Okay, that's great. That's great. First of all, let me tell you more about if you are interested to join. See, we offer actually 2 courses in 1500, and all of these skills are actually the skills that everyone needs. It doesn't matter whether you are a freelancer, whether you are, you can say, a businessman, you are anyone. It's really important to learn these skills of graphic designing, Canva design, SEO, YouTube, advanced Excel, etc., right? And spoken English and communication skills. These two are the skills that are needed for, you can say, in any case you need to improve your English, you need to improve your communication skills, right? So in 1500 we offer 2 courses, 4 courses in 2500 and 6 courses in 3500. Okay, so हम लोग मिक्स जो है वो बायलिंगुअल बात करेंगे, उर्दू में भी एंड इंग्लिश में भी. सबसे फर्स्ट जो है मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ. टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि हम लोग उर्दू लैंग्वेज में इंग्लिश सीख सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि हम लोग उर्दू में इंग्लिश सीख सकते हैं? यस. ओके. ओके, बट अगर एक लैंग्वेज आप सुनेंगे नहीं तो आप उसको किस तरह से सीखेंगे? टेल मी. इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? It's not possible to learn English through Urdu language. Yes, जब आप कोई चीज नहीं सुनेंगे, आपके माइंड में वो चीज नहीं जाएगी, so आप उसको किस तरह से बोलेंगे, right? So it is really important if you want to speak English, if you want to learn English, so you have to listen English. How you learn your native language? Tell me how you learn. I'm talking slowly in English now. How you learn your native language? Tell me. Yes, by listening. No, by listening. In your childhood you used to listen that your parents talk in your native language, right? So just through listening, after 1 to 2 to 3 years you started talking in your native language. So it's like that. Tell me, is it possible for you to speak a language that you have never listened? जो लैंग्वेज आपने पहले कभी नहीं सुनी, आप क्या उस लैंग्वेज को बोल सकते हैं? Of course not. So how can you say that you can learn English through Urdu? It's not possible, right? Okay, so now let's see from which category you belongs to. But before that, let me share with you our today's topic. हमारा जो आज का टॉपिक है, it's about accent adaptation and it's about fluency, कि आप किस तरह से इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. I hope कि आप लोग इस सेशन से कुछ सीखेंगे. Okay, so let's get started. First of all, tell me, what do you think? What is the key? What is the one effective key to fluency? Fluency की सबसे ज़्यादा effective key क्या है? Yes, what's the most effective key? Talking. Talking comes later.
देखिए आप तब बात करेंगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी, जब आपको इंग्लिश आती होगी, राइट? लिसनिंग एक्चुअली, हैविंग नॉलेज। बहुत से लोगों के पास नॉलेज होता है बट दे डोंट नो हाउ टू डिलीवर इट, राइट? So the key to effective fluency is just listening all the time. If you will listen to this language, then you will see the difference in your way of talking automatically. Tell me what will happen if you just used to listen a song on loop. अगर आप कोई song loop पे सुनते हैं 24 hours तक आपने एक ही song सुना, what will happen? At the end of the day, unconsciously you sing that song, right? You not memorize, you sing that song, you sing the beat of that song at the end of the day. Yes, that what happens if you really want to speak English, if you really want to learn English. So what matters a lot, what is really important? Listening. Now which kind of listening, अब आपको किस तरह की listening जो है वो require है? You know, we have different kind of accents. We have British accent, we have American accent, Canadian accent, Scottish accent, different kind of accents we have. But the thing that matters is which accent you want to adopt, right? Go and search for some of the good channels, some of the good, you can say, speakers who have the accent that you want to speak, right? What is difference between, of course, see, what is the difference between Urdu language in Lahore and the Urdu language in Karachi, right? It's like that. According to the culture, according to people, according to your environment, your accent varies. जो लाहौर में लोग रहते हैं उनका उर्दू एक्सेंट चेंज है, जो कराची में रहते हैं उनका उर्दू एक्सेंट चेंज है, राइट? एंड ऑल्सो डिफरेंट कम्युनिटीज पे डिपेंड करता है आपका एक्सेंट. सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा एक्सेंट अडॉप्ट करना चाहते हैं, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लुएंसी. हम लोग ग्रेजुअली बात करेंगे रिगार्डिंग फ्लुएंसी, देन हम लोग बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट बिल्डिंग. एक्सेंट एक डिफरेंट चीज है, प्रोनाउंसिएशन एक डिफरेंट चीज है. प्रोनाउंसिएशंस आर न्यूट्रल, प्रोनाउंसिएशन न्यूट्रल होती है. फॉर एग्जांपल, alphabets A, B, C, D, E, F, G, they have pronunciation, right? But in different accents, when we pronounce the word, for example, we have the word WORLD. In American accent, we'll pronounce R, world, and in British accent, we'll say what, right? And just like water, WATER, water is a simple pronunciation, but in American accent, it's water, and in British accent, it is water, right? It's like that. Tell me the difference between accent and pronunciation is clear to all of you? Is it clear? We'll go gradually, we'll go gradually. So you all really need to understand these small things firstly. Okay, okay, great. Let's talk about how to speak English fluently. First question. See, NS Training provides 1 month courses, and the students have this question in mind: how we will be able to learn English in just 8 sessions? क्या हम 8 sessions पे किस तरह से English सीख सकते हैं, right? Let me tell you, it depends on your mindset. ये आपके mindset पे depend करता है. If you want, if you have that urge to speak, so you can speak English in 1 week. आप 1 week में भी English सीख सकते हैं. But even if you are not ready, you don't want to, तो आप 1 साल भी लगा लें, आपको English नहीं आएगी. So it's up to you. मैं gradually सारी चीजें cover करूंगी. Right now, you can focus on what I'm trying to say. Okay? So मैंने आपको बताया कि हमारे 1 month के कोर्स में आप लोग easily English सीख सकते हैं. It's up to you कि आप 1 week में सीखते हैं, 1 month में सीखते हैं, या 1 year में भी different courses करके नहीं सीख पाते. So it's all the game of your mindset. It's up to you. You got it? So you're curious about how we will be able to speak English in 1 month. Is it clear? Let's talk about how to speak fluently. Okay, what's the first thing? Let's see. English fluency tip number 1 is accuracy. Which kind of accuracy? You know, what is the biggest mistake that we do all the time? The biggest mistake is हम difficult word से start करते हैं. हम क्या करते हैं? हम Google पे जाते हैं and हम लिखते हैं difficult, या हम लिखते हैं
advanced English words for daily use, right? अब बहुत से ऐसे वर्ड्स आते हैं जो कि जिनसे हम अनफैमिलियर होते हैं, राइट? बहुत से एडवांस वर्ड्स आते हैं. फॉर एग्जांपल, if here is a vocabulary, I'm just giving you example. Okay. Interactions through camera. I mean, without speaking in pregnant, how will be able to speak well? See, that's what I'm saying you. ये सिर्फ एक mindset होता है कि हम लोग एक month में किस तरह सीख सकेंगे. हम लोग एक month में किस तरह से different steps के through सीखेंगे. It's the thing. There is a different in these mindsets, right? ये दो different mindsets हैं. So ये आप पे depend करता है. सिर्फ listening से भी आप English सीख सकते हैं, just through listening. ये आप पे डिपेंड करता है. ओके, यू गेटिंग मी? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए, हम लोग आपको क्लास में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस देंगे जो कि आपको करनी होंगी. डिफरेंट ऑडियो प्रैक्टिसेस होंगी, डिफरेंट टास्क्स होंगे, डिफरेंट डायलॉग्स होंगे. हम लोग अपने कोर्स में डिफरेंट डायलॉग्स के थ्रू बात करेंगे. आपका एक डिस्कशन ग्रुप बनाया जाता है जिसमें डिफरेंट मेंबर्स डेली बेसिस पर एक स्पेसिफिक टाइमिंग पे स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं. Right, so that you can do speaking practice also, and if you have any query, any problem, you can talk to the instructor, right? So it's like that. So we were talking about the first tip. Let's get into it. Accuracy. What is the accuracy? I was talking about this thing. हम क्या mistake करते हैं in fluency? हम लोग बहुत difficult words की तरफ जाते हैं और जो basic words हैं, for example, come, sit, stand, read, right? Yeah, I will explain what we'll read in our course completely at the end. Okay, so ये जो tips मैं आपको बता रही हूँ, it will be really helpful to you. So I hope कि आप उसको गौर से सुनेंगे and इसके regarding कोई भी question होगा so आप मुझसे पूछेंगे. So first चीज हमने discuss की कि आपने बहुत difficult words की तरफ नहीं जाना. आपने daily basis पर क्या करना है? 7 words select करने हैं. For example, today is day 1, so you have to select 7 words that you use in your daily conversation. For example, हम अपनी daily conversation में English के बहुत से words use करते हैं. For example, water, come, sit, stand, please, welcome, thank you, there, obedient, different kind of words. Good morning, good afternoon, prayer, different kind of words we use, right? So आपने क्या करना है? आपने basic words से start करनी है. जब आपकी basic words की pronunciation बेहतर होगी तो आपकी पूरे sentence की pronunciation automatically बेहतर हो जाएगी. You getting my point? What you need to do on daily basis, early in the morning, you need to write down 7 words, and उन 7 words की pronunciation आपने सुननी है Cambridge dictionary पे. Here is a Cambridge dictionary. For example, the word is come. आपने क्या करना है? No, everything is easy, nothing is hard. It's all the game of your mindset. And that's what we learn in communication skills. Okay, so ये word है हमारा. For example, come is a word. आपने इस word को Cambridge dictionary पे लिखना है. आपने देखिए, अगर आप बीच में क्वेश्चंस पूछेंगे तो इससे ये प्रॉब्लम आएगी कि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं दे सकूंगी और हम ब्लॉग पोस्ट भी कवर नहीं कर सकेंगे और हमारा टॉपिक और आपके क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स एज इट इज रह जाएंगे. सो ज्यादा बेहतर है कि हम लोग पहले ये चीजें कवर कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, देन वील डिस्कस अबाउट इट. ओके, परफेक्ट. सो फॉर एग्जाम्पल, आपका वर्ड है कम. सो आपने क्या करना है? ये वर्ड जो भी डेली बेसिस पे 7 वर्ड्स आप यूज करते हैं, आपने वो वर्ड्स लिखने हैं. कैम्ब्रिज डिक्शनरी पे जाकर उन वर्ड्स को लिखना है. जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर यूके एक्सेंट है एंड यूएस एक्सेंट है. 2 एक्सेंट्स हैं. यूके एक्सेंट इज अ ब्रिटिश एक्सेंट, यूएस एक्सेंट इज अमेरिकन एक्सेंट. सो इट्स अप टू यू, आप कौन सा एक्सेंट अडॉप्ट करना चाहते हैं. अब ऐसे नहीं करना कि एक वर्ड के लिए आप यूके एक्सेंट कर रहे हैं एंड नेक्स्ट वर्ड के लिए आप यूएस एक्सेंट कर रहे हैं. नो, you have to switch to the same accent. Got it? So उन pronunciations को आपने at least 13 to 17 times सुनना है. Okay, you have to listen to the pronunciations at least 13 to 17 times. सिर्फ एक दफा नहीं सुनना आपने उसको. Okay, okay. So that's the first thing about accuracy. इससे आपके pronunciations पता चलेंगी, आपका accent बेहतर होगा, daily conversations बेहतर होंगी. That's a neutral. I'm not talking in any accent. It's a neutral accent. Next thing, second one is rate. Now, what is the rate? It means that ability to pause when you need. What does that mean? It means
You must know. Now see, in British accent, we have pauses. In American accent, we focus very much on R's. It's very lenient. Our American accent is very lenient. For example, if I'm saying water, button, taken, doing, will not pronounce the whole words in American accent. But in British accent, there are lots of pauses. For example, if I'm saying word, button, token, whole, rate, data, like that. So in British accent, we focus on the pauses, and in American accent, it's very lenient. Yeah, of course, it's really important. And in British accent is actually a little bit difficult, but it is really good. It's really elegant. The reason is because it sounds more formal. Uh, no, both accents are fine. Every accent is good. It's up to you which accent you want to adopt. I'm not suggesting you any accent, but it's up to you. But I would suggest you to go with British accent. That sounds more elegant and more good. Yeah, of course you can use it, which and we are learning in this meeting, British. Sure. I will tell you the tips. I will tell you the tips that how can you learn the British and American accent. That's what I'm telling you in second one. In British accent, you won't pronounce R. ब्रिटिश एक्सेंट में आप आर प्रोनाउंस नहीं करते. अब किन पोजीशंस में आर प्रोनाउंस नहीं करते? जब आर बिल्कुल लास्ट पे आता है. फॉर एग्जांपल वाटर, देयर, THERE, इसमें हम लोग आर प्रोनाउंस नहीं करेंगे. देयर, and lots of that words will not pronounce R in the very end and in the middle position. अगर R बिल्कुल end of the word पे आता है या फिर जिस तरह से यहाँ पर है in the middle आता है, हम उसको pronounce नहीं करते. But अगर R second position पे या first position पे like right, rate, radiant, group, तो हम उसको pronounce करते हैं. ये मैं आपको British accent के बारे में बता रही हूँ. But American accent में ऐसा कुछ नहीं है. American accent में हम R को prominently pronounce करते हैं. Got it? Is it clear to all of you? British accent is very much with the closed mouth. Like you can see whole, come, quote, like that. And American accent is very open. Call, catch, caught, like that. Okay. Next, let's talk about third one. That's stress, rhythm, and intonation. Let me tell you what is it. Now, let's wind up these all three tips. In these all three tips, the main thing that matters a lot is your listening. जब आप सुनेंगे British accent को properly, so आपको पता चलेगा, like for example, Jay Shetty podcast. अगर आप Jay Shetty की podcast सुनेंगे, उसमें British accent use किया जाता है. उसमें आपको पता चलेगा कि आपने R को मिडिल पोजीशन में और वेरी एंड ऑफ द वर्ड प्रोनाउंस नहीं करना. लेकिन अगर आर फर्स्ट पोजीशन पे या सेकंड पोजीशन पे आता है, आपने उसको प्रोनाउंस करना है. यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सब लिसनिंग में है. कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं है. एक्सेंट डेवलपमेंट की कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं है. इट्स ऑल अप टू यू हाउ मच यू लिसन, हाउ मच यू ऑब्जर्व. ओके, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव रेड? द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव रेड इज accuracy. Accuracy, how can you develop accuracy? By starting from the basic words. Basic words जो भी daily basis पर आप use करते हैं, आपने day by day 7 words choose करने हैं और उन 7 words को आपने Cambridge Dictionary पे जाके लिखना है. उनकी pronunciation सुननी है. इसकी proper practice हम actually अपनी classes में करते हैं. हम students को class में vocabulary का एक link provide करते हैं. यहाँ पे मैंने एक link open किया था, that one. ये हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं. जब ये लिंक ओपन हो जाता है, सो इसमें फ्लैश कार्ड्स हैं. सी, इसमें डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स हैं. अब इन फ्लैश कार्ड्स में प्रोनाउंसिएशंस हैं. इसमें एक्सेंट नहीं है, इनमें प्रोनाउंसिएशन है. इसका लिंक क्लास के स्टूडेंट्स को सेंड किया जाता है. देन वो डेली बेसिस पर क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिखते हैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी में. यहाँ पे जाके वो फिर जो भी एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन के बाद उनको चूज करना होता है, वो एक्सेंट चूज करते हैं. इस तरह से डेली आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होती है और आपकी बेसिक जो डायलॉग्स हैं, बेसिक कन्वर्सेशन है, वो भी इंक्रीज होती है, इनहांस होती है. गॉट इट? सेकंड थिंग, योर पॉजेस. सेकंड थिंग वाज your pauses, your ability to pause, you know when to connect the word and when to just break down the word with the help of short pauses. And the third one is stress and rhythm. And this stress and rhythm can only be developed by listening. At least, okay, tell me, how much time you spend on listening?
आप इंग्लिश लिसनिंग पर डेली बेसिस पर कितना टाइम स्पेंड करते हैं अपने 24 आवर्स में से? Yes, in your 24 hours, how much time you spend? Hmm, 0, 20 minutes, more than even 5 hours. Okay, okay, okay. So 5 minutes and 20 minutes and 30 minutes, no. कम से कम आपको 120 minutes, 60 to 120 minutes spend करने चाहिए एक formal podcast को सुनते हुए. I'm not talking about bilingual videos जो कि इंग्लिश में भी होती हैं, उर्दू में भी होती हैं. No. देखिए, अगर आपका माइंड उर्दू में ही बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है फ्लुएंसी में, जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है, दैट इज योर ट्रांसलेशन इन योर माइंड. आप इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं एंड उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, जिसकी वजह से जब आप बोलते हैं तो आपको सोचना पड़ता है कि मुझे इस वर्ड को पहले उर्दू में कन्वर्ट करना है, फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, राइट? That is the biggest problem. So how can you improve this thing? That's one practice which is called description practice. उस डिस्क्रिप्शन प्रैक्टिस को यूज किया जाता है टू ट्यून योर ब्रेन इन इंग्लिश. उसमें आपने क्या करना होता है? you need to you need to observe your surrounding, where you spend most of your time, and then after that you need to select one object. आपने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, एंड एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने अपने माइंड में 5 to 7 descriptive sentences banane hain about the benefits of that object in English. For example, I have selected a computer. So if I have selected a computer or a laptop, so I will make 5 to 7 descriptive sentences in my mind in English. It's not speaking practice. It's your mind rehearsal in English. So you can say in your mind, laptop is majorly used to save data and to collect lots of information. It's really portable and convenient. I can save my data, I can do my researches, I can use it for the entertainment purposes, and it's really easy to use it, and feasible and portable too. ये सारे sentences आपने अपने mind में बनाने हैं. Initially आपको sentence making में difficulty होगी, but that's how it works. इससे आपके माइंड में ये जो प्रॉब्लम आती है, आपको इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट करना है, उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, वो इम्प्रूव होगी. अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ डेली बेसिस पर ये प्रैक्टिस करते हैं, तो यू विल सी द इम्प्रूवमेंट इन योरसेल्फ. दैट्स कॉल्ड डिस्क्रिप्शन प्रैक्टिस. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर, दिस प्रैक्टिस, डिस्क्रिप्शन प्रैक्टिस? यस. सो डेली बेसिस पर आपने ये प्रैक्टिस करनी है. अब जब एक चीज आपके माइंड में है, so it will become easy for you to say it, to speak it, right? But if something is not in your mind, आप still इंग्लिश से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश बायलिंगुअल वीडियोस देख रहे हैं, जो कि उर्दू में भी बात कर रहे हैं, इंग्लिश में भी बात कर रहे हैं, या किसी और लैंग्वेज की, so आपका माइंड उर्दू में ही अटका रहेगा. एंड ऑल्सो डोंट वॉच वीडियोस विद सबटाइटल्स. अगर आप सबटाइटल्स के साथ देखेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? आपका जो फोकस होगा वो सबटाइटल रीडिंग पे होगा, राइट? आपका फोकस सबटाइटल रीड करने पे होगा, ना कि ऑब्जर्वेशन पे एंड लिसनिंग पे. So, अब से आपने कोई भी ऐसी वीडियो नहीं देखनी जो कि विद सबटाइटल्स हो. ऑल्सो आपने इस तरह के चैनल्स नहीं देखने जिनमें मिक्स लैंग्वेज बोली जाती है. Got it? There are a lot of channels you can search on YouTube. You can search, you will find the best channels. Okay. Is it clear? It depends on you, in which you are interested. जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप वो वीडियोस देखिए जिन वीडियोस में आपका इंटरेस्ट है. फॉर एग्जांपल, अगर आपका आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है, वॉच आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट, यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट. If you are very much interested in elegance and lifestyle, self-grooming videos, so you can go with School of Affluence. If you want to watch any podcast, you can go with Jay Shetty podcast. If you want to watch any motivational speaker, so you can go with it. British accent YouTube channel, I'm suggesting you Jay Shetty. Yeah, of course, you can watch movies, you can watch series. Of course, it will help you. Of course, by listening to the native speakers, you will be able to speak up. That's the ultimate thing. Martin Luther King. I think the speeches that you will watch by Martin Luther King, they are not very much clear. So I will not suggest you.
but you can read. But if you want to listen for yourself, you can listen, but there's not proper accent in those videos. You can watch Oprah Winfrey. Okay. Brian Tracy, you can watch. Listen English, but doesn't get the accent, demotivate to learn English, so switch to. See, everything require patience and time. Everything require patience and time. So you can do this thing. What you need to do basically, be consistent. Okay. सी जब आप किसी नई क्लास में जाते हैं आपको वहां एडजस्ट करने में टाइम लगता है या अगर आप किसी डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाते हैं आपको एनवायरनमेंट को समझने में टाइम लगता है राइट दैट्स हाउ इट वर्क्स it actually require 5 to 7 days but consistency is the key आपको consistency के साथ वो वीडियोस अगर आपको नहीं भी समझ आ रही सो इट्स फाइन ग्रेजुअली वो आपको समझ आने लगेंगी जब आप उनको कंसिस्टेंसी के साथ सुनेंगे people used to go to abroad. Tell me, they attend some kind of spoken English classes there? No, not at all. They just, because of their environment, they automatically talk like native speakers because they have to listen to them all the time. Although initially when they go there, they won't be able to understand. Initially जब लोग foreign countries में जाते हैं, उनको natives की language समझ नहीं आती, right? But gradually जब वो उस environment में रहते हैं, after spending 1 to 5 years there, they talk like native, they speak like natives, right? वो native speakers की तरह बोलने लगते हैं. You got my point? So अगर किसी को इंग्लिश समझ नहीं आती it is fine. But आप ऑब्जर्व करें पिक्चर्स को ऑब्जर्व करें वीडियो को स्पीकर को ऑब्जर्व करें कि वो किस तरह से हैंड जेस्चर्स कर रहा है एंड ट्राई टू कैच द वर्ड्स जब आप वर्ड्स को कैच अप करने की कोशिश करेंगे देन ग्रेजुअली आपको चीजें समझ आने लगेंगी बट एक बार दो बार तीन बार पहले 5 दफा जब आप इंग्लिश नेटिव इंग्लिश सुनेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा बट डोंट फील डीमोटिवेटेड here what motivates you is your ultimate goal to speak English. आपने अपना गोल याद रखना है कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं why you want to talk in English why you want to speak English. Got it? Is it good? When we giving IELTS speaking face to face test is fluency of course fluency is important of course. देखिए अगर अगर मैं आपसे इस तरह बात करूं are you guys getting me or not? Are you there? There are lots of pauses, right? You won't be able to get me. You won't be able to understand what I'm trying to say, right? So that matters. Fluency का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत तेजी से इंग्लिश बोलनी है. No. Fluency means कि आपने इंग्लिश इस तरह से बोलनी है कि आपके एक और दूसरे वर्ड में पॉज ना हो, एक रिदम हो. You're getting it? English fluency is not about speaking in a very fast and furious way. It's about speaking politely and gently. Grammar and writing skills. Grammar तो सिर्फ practice से improve की जाती है. And writing skills of course देखिए अगर आपने listening improve करनी है, speaking improve करनी है, तो हर चीज में आपको जो चीज perfect चाहिए आपको वही चीज repeated mode पे करनी है. People who say that accent is important. That's a really you can say misconception about accent. Tell me, is our native language? Is English is our native language? Yes or no? No, of course not. It's not our native language. So how can we develop an accent of a new accent of a language that is not our native language? हम किसी ऐसी language का किस तरह से accent develop कर सकते हैं जो कि हमारी native language है ही नहीं. सो ऑफ कोर्स जो लैंग्वेज है वो अपने ही एक्सेंट में अच्छी लगती है. हमारा उर्दू एक्सेंट है, क्या हम इसका स्पेनिश वर्जन निकाल सकते हैं? उर्दू का स्पेनिश वर्जन निकाल सकते हैं हम? नो. अगर स्पेनिश लोग कहें कि हमने उर्दू का स्पेनिश वर्जन निकालना है, सो इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स नॉट. इट्स अ जोक, राइट? इट्स अ जोक. सो I think language without accent is really a joke and nothing else, right? So that's important. एक्सेंट इज रियली इंपॉर्टेंट. अगर आपको एक्सेंट ही नहीं है, आप किस लिए एक्सेंट सीखते हैं? आप किस लिए इंग्लिश सीखते हैं? ताकि आप ग्लोबल कम्युनिटी से बात कर सकें. ग्लोबल कम्युनिटी एक्सेंट इंग्लिश समझती है, राइट? नो. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. प्लीज उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट करना बंद करें. अगर आप उर्दू से इंग्लिश में करना चाहते हैं, ओके, उर्दू से इंग्लिश में आई वुड सजेस्ट यू डिक्शनरी. यू डिक्शनरी आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? ओके.
Improve your accent with these 5 simple tricks. The first one, learn the phonetic alphabet. What are the phonetic alphabets? Phonetic alphabets means the phonics that we have learned in our childhood. Phonics. For example, that we called phonics, right? Alphabets. I would suggest you कि आप alphabets की pronunciation study करें. आप Google पे जाएंगे, सब कुछ आपको Google पे मिल जाएगा. आप लिखें all alphabets British pronunciation. देखिए आपको सारे अल्फाबेट्स की ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगी. सो फर्स्ट थिंग आपने किससे स्टार्ट करना है? अल्फाबेट्स से. जितने भी अल्फाबेट्स हैं, मैं अल्फाबेट्स की बात कर रही हूँ, जितने भी अल्फाबेट्स हैं आपने सबसे पहले अल्फाबेट्स की प्रोनाउंसिएशन पे काम करना है. जब आपकी अल्फाबेटिकल प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी, अब देखिए बिलियन ट्रिलियन वर्ड्स हैं इन द वर्ल्ड, राइट? आप कितने वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अल्फाबेट्स की प्रोनाउंसिएशन सीख लें. जब आप अल्फाबेट्स की प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा वर्ड एक वर्ड की डिफरेंट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन करना, राइट? uh, See, they don't need that, right? They are actors, they are celebrities, so I can't say anything about them. It's their choice, and it's your choice to speak English in influential way or not, right? So it's up to you which level of English you want, right? We have to watch podcasts, we need to catch the words, but if we don't have environment, let me tell you, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा environment English नहीं है. हम लोग अपने हमारा environment सोशल मीडिया है, राइट? अकमल अंग्रेजी वाला ये सिख what helped you improve your English language writing and its accent? I'm on the stage where I'm reading books and speak to myself in order to improve myself. Can English improve? Okay. हमारा जो आज का टॉपिक है that is about accent development and regarding fluency, ठीक है? Fluency की ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ. हम जल्दी से ये एक्सेंट का टॉपिक वाइंड अप कर लेते हैं कि हम लोग एक्सेंट किस तरह से डेवलप करते हैं. ओके, जस्ट गिव मी 5 minutes, देन आई विल टॉक अबाउट योर क्यूरीज एंड प्रॉब्लम्स. सेकेंडली, गेट फैमिलियर विद द स्पोकन लैंग्वेज. फर्स्ट चीज हमने देखी कि एक्सेंट अगर हमने डेवलप करना है, अपनी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करनी है, तो सबसे पहले फोनेटिक्स पर काम करना है, बेसिक अल्फाबेट्स पर काम करना है, उनके प्रोनाउंसिएशन पे काम करना है. और वो आपको कहाँ से मिलेंगे? Google say. Second, get familiar with the spoken language. How can you do that? Through listening different kind of TV shows, different kind of reality shows, different kind of interviews, different kind of podcast. जितना ज़्यादा आप इस लैंग्वेज को सुनेंगे, आपकी फैमिलैरिटी इस लैंग्वेज से उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी. आइडेंटिफाई व्हाट्स वियर्ड अबाउट द प्रोनाउंसिएशन. अब प्रोनाउंसिएशन के कुछ रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं और कुछ रूल्स इंप्लीमेंट नहीं होते. फॉर एग्जांपल, समटाइम्स सी की प्रोनाउंसिएशन ख होती है, समटाइम्स सी की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल लीनियंट होती है. सो जब आप डिफरेंट काइंड ऑफ लिसनिंग एंड वॉचिंग रिहर्सल्स करेंगे, सो आपको पता चलेगा कि डिफरेंट वर्ड्स को डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है. समटाइम्स ए की प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट. फॉर एग्जांपल, डेटा, डेटा में ए की प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है. able, able में a की pronunciation different है. Owl, OWL, owl. In this one, O have different pronunciation. Oat. In this OUGHT, oat, O has different pronunciation. So different pronunciation को जो कि sometimes weird भी होती हैं, exceptional होती हैं, वो आपको किस तरह से पता चलेंगी? Of course, just through listening. Fourth one, automatically they are already saying listen, listen, and listen. And the fifth one, practice. Make, of course, practice. You need to do more practice. As much as you will practice, it will become easier for you to understand. That's about accent. Now I think कि आप लोग questions पूछ रहे हैं, so मुझे questions के आपकी queries के answer करने चाहिए. So yeah, yes, you can ask the question. If someone is good in English but they hesitate due to fear of speaking, ये चीज आपको हमारे communication skills, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक इंग्लिश का है. ये जो आप क्वेश्चन पूछ रही है कि देखें, जो फियर होता है आपके अंदर, जो आप हेजिटेट करते हैं टू स्पीक इंग्लिश, it's because it's a new language to you and you are uncomfortable with this language. आप comfortable कब होते हैं किसी के साथ? जब आप उसके साथ time spend करते हैं. So आप English language के साथ जितना ज़्यादा time spend करेंगे, आप उतना comfortable होंगे इस language के साथ. So again, I would suggest you listening.
हाउ कैन इम्प्रूव माई इंग्लिश राइटिंग? इंग्लिश राइटिंग, आज का हमारा टॉपिक स्पीकिंग का है, सो राइटिंग का क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो इज फैमिलियर। बट राइटिंग आप किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं? रीडिंग के थ्रू। जब आप बुक्स रीड करते हैं, जब आपके पास बहुत ज्यादा मटेरियल होता है, तो आप इजीली लिख सकते हैं। जब आपके पास मटेरियल ही नहीं होगा, सो हाउ यू विल बी एबल टू राइट? वी डोंट हैव एनवायरनमेंट वेयर वी टॉक इंग्लिश। लेट मी टेल यू। देखिए, हम लोगों ने जो काम करना होता है, हम लोग उसको गूगल पे जाके फौरन सर्च कर लेते हैं। बट जब इंग्लिश सीखने की बारी आती है, तो हम लोग कहते हैं हम किस तरह से सीखें। बहुत सी फ्री एप्स हैं। देखिए, मैं आपके सामने गूगल पे सर्च करूंगी, फ्री इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस एप्स। लेट्स सी। ओके, सो आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे फ्री इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस एप्स, आपके सामने बहुत सी एप्स आ जाएंगी। बट द थिंग इज, ओके, इट्स नॉट वर्किंग राइट। These are the apps that you can go with. The screen is visible to all of you. देखिए, ये आपके पास एप्स हैं। आप जब गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि कौन सी एप्स जो है वो फ्री इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, फ्री इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए हैं, तो आपको बहुत सी एप्स मिल जाएंगी। सो इट्स अप टू यू, राइट? ये आपने सर्च करना है। बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। जब चीज आप खुद सर्च करते हैं, तो आप उसको बेटर वे में समझते हैं, राइट? बहुत सी एप्स हैं, मैं आपको रिकमेंड भी कर दूं एप्स। बट द थिंग इज, कुछ ऐप्स जो हैं वो सिर्फ ऐप स्टोर से होंगी, एंड कुछ ऐप्स जो हैं वो एंड्रॉइड में हैं, कुछ नहीं अवेलेबल। सो अपने सेल फोन के हिसाब से, अपने यू कैन से अपने कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स के हिसाब से आपने सर्च करनी है ऐप्स की कौन सी बेस्ट सुटेबल ऐप है फॉर स्पीकिंग। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, you getting me? And also, lot of people say that our environment is not English. So agar aap kehte hain ki hamara environment English nahi hai, that's wrong. That's just an excuse that you make. Tell me, how much time you spend on social media, on Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, WhatsApp, and lots of other Telegram, different apps. How much time you spend? I've never listened to Mustafa Khan. I've never listened to. Okay, 5 to 6. Which accent? Okay, okay. A lot of time. Okay. Okay, fine. So, what we were talking about, what was the question? I forgot. My apologies. Which question I asked to you? I forgot. Can you please tell me? We were talking about free English apps, right? Yeah, how much time you spend on social media. That's what we were talking about, environment. Yeah, thank you so much, Farina. So yes, that's what I'm saying. What you need to do, you need to go on different social media platforms. For example, if you use Facebook a lot, so you can join different kind of English groups there, different kind of English chatting groups on there. If you spend time on WhatsApp, so you can talk to some of the fellows that have good English skills. You can set some time slot, like our students used to do that in our groups. What do our students do? They practice at some specific time in the groups. So that's what you can do. That's how you can utilize WhatsApp. You can utilize Facebook. On Instagram, you can follow some of the good channels that have excellent English skills. आप डिफरेंट काइंड ऑफ यूट्यूब चैनल्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपके इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करें। सो ये बहुत मैटर करता है। दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड। सो व्हाट मैटर्स अलॉट इट इज कि आपने अपने सोशल मीडिया एनवायरनमेंट को ऐसा बनाना है कि जब भी आप अपना सेल फोन ऑन करें, कुछ ऐसी एप्स करें अपनी लॉक स्क्रीन, आपको वोकैबुलरी वर्ड शो हो। सो आपने क्या करना है, आपने अपनी सोशल मीडिया एनवायरनमेंट को ऐसा बनाना है कि आप जब भी अपना सेल फोन पकड़ें, तो आप इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश से रेलेवेंट चीजें जो है वो शो हो। Got it? Is it clear to all of you? That's how you can create an English environment. और जो लोग कहते हैं हमारा environment English नहीं है, that's just an excuse.
join academy. Joining academy or joining any English institute is really important because वो आपको एक guidance provide करते हैं, एक check and balance होता है, आपको पता होता है that yeah, you are answerable to that person, you are answerable to that instructor. That's why joining any institute is really important. YouTube पे बहुत सारी फ्री वीडियोस हैं जो अवेलेबल हैं, बट आप YouTube से क्यों नहीं सीख सके अभी तक? The reason is because you are not accountable to that person, you are not answerable to that person. But when you join a specific institute, for example, NS training you have joined, so you know that you have to submit your task to the instructor, and it's not the tasks that are very hectic. हम आपको different engaging tasks देते हैं जो कि आपका interest develop करें in learning English. Okay. न्यूज लिसनिंग इज एक्सेलेंट. न्यूज लिसनिंग बहुत बेहतर होती है. उसका रीजन ये है, न्यूज लिसनिंग में अपडेटेड वर्ड्स यूज किए जाते हैं, one-on-one academy for IELTS, because of course IELTS is something else, it's a complicated thing, and उसके लिए different students का different mindset होता है, so that's why. So after this English language course, still we have to join any institute? I don't think so. After joining NS training, you need any other institute, because the reason I'm again saying it's all the game of your mindset. अगर आपका mindset clear है कि हम एक महीने में सीख जाएंगे, अब हमें किस तरह से सीखनी है with our instructor, that matters a lot. Mentors like Mark Nicholas and you said it's good. See, अगर आप किसी भी, मैं आपको सिंपल आपके इन क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि आपने नेटिव स्पीकर्स को सुनना है. नेटिव स्पीकर्स को सुनना है. अगर आप नेटिव्स कितना बोलना चाहते हैं तो नेटिव स्पीकर्स को सुने. अगर आप सिर्फ इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो फिर तो आप कोई भी वीडियो देख लें, आपने सिर्फ इंग्लिश बोलनी है, चाहे आप किसी भी एक्सेंट के साथ बोलें. ओके okay, yeah, let's discuss the course outline to all of you. Where is it? Let me see. Our spoken English course outline. Okay, just give me a minute. Let me find the spoken English course outline and let me share it with you. And I hope कि आज के session से आपने बहुत सी चीजें सीखी होंगी. Here is the spoken English outline. The first thing we will learn English as a language, how English as a language is really important. Secondly, हम communication skills के बारे में little bit चीजें पढ़ेंगे. Thirdly, informal and formal communication pattern in English. Skills to speak clearly and efficiently, pronunciation and fluency in English language, basic use of grammar. अब यहाँ पर हम लोग grammar जिस तरह schools में करते हैं उस तरह से नहीं सीखेंगे. यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि real world situations में आप किस तरह से grammar को utilize कर सकते हैं when it comes to talking to other person. Okay. Next thing is improvising vocabulary tricks. अब बहुत सी vocabulary words हैं, billion trillion words हैं, हम वो सब words नहीं सीख सकते, but हम कुछ ऐसे words सीख सकते हैं जो कि casually भी use हो and formally भी. Accent and dialect, English speaking of native language, fear of public speaking, building confidence to speak English effectively, career options with fluency in English. The next question is, after learning English, how can we proceed in our career to speak English, right? So we can discuss it. Also, हम different techniques cover करेंगे अपने course में, different dialogues के through class में practice करेंगे कि expressions के साथ आप English किस तरह से बोल सकते हैं, right? Because English without accent and expression is useless. इस course की price जो है वो 1000 है. बाकी अगर आप 2 courses join करते हैं, so the price is 1500. 3 courses, courses join करते हैं, I think it's 2500. The prices are mentioned here. You can check our Instagram. Each and everything is available here. See, 2 courses in 1500, 4 in 3500, and 6 in 3500. So I hope कि ये session आपके लिए interactive रहा होगा, and basic जो चीजें important होती हैं English speaking के लिए, that matters a lot, right? And अगर आपको basically confidence का problem है, let me tell you one thing, आप video recording कर सकते हैं. Video recording, देखिए, video recording आपने randomly नहीं करनी. Randomly बिल्कुल video recording नहीं करनी आपने formal dressing करनी है. Formal dressing करके आपने एक formal topic select करना है, and after that आपने video recording करनी है. Okay, जब आप video recording करेंगे तो that will be a different you can say experience, and it will help you to build up your confidence, because facing camera in formal dressing, it's not easy.
So ये आपके लिए एक टिप है कि अगर आप अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहते हैं, आप वीडियो प्रैक्टिस कर सकते हैं. What will be the timing of course daily basis? I think it's 4 to 5 and 5 to 6 p.m. It depends on which batch you enroll actually, but the time slot will be in between 4 to 6. And the classes will be on Saturday and Sunday. No worries at all. You can go with the recording. I think they will provide you the recording. Any other question regarding English? Any other question? And just love this language. It's really a good language. Yeah, you can ask your question again. Yes, you can ask your question again. The way, okay. Thank you so much, all of you, that you joined us and you have learned something. राइटिंग स्किल्स आप रीडिंग के थ्रू इंप्रूव कर सकते हैं. जितना ज्यादा आप रीड आउट करेंगे आपको पता चलेगा कि किस तरह से अच्छी ऑथर्स जो है वो लिखते हैं. idioms, no, idioms are not used nowadays. Slangs are used. Slang words should be preferable adopt. I would suggest you UK accent, but all accents are good. Oh, that's great. Good. So it's really nice to have a session with all of you, and I hope to see you in the class soon. So any other question? Okay, that's great. That's great. Okay. Slang words are actually the small phrases that native speakers use. Okay, then all of you, so take great care of yourself and Allah Hafiz.